हेलो माय फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। तो अब हम देखने जा रहे हैं फ्लूइड मैकेनिक्स के कुछ और क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। ठीक है। जिसमें हमने फोर्थ में दो क्वेश्चन है, फोर्थ में ए और बी है, तो हम इसका बी पार्ट देखने जा रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये न्यूमेरिकल टाइप का है तो इसको मैं एक बार सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या दिया हुआ है, एक स्ट्रीम फंक्शन दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और हमसे पोटेंशियल फंक्शन मांगा है। ठीक है, तो स्ट्रीम फंक्शन हमें साई दिया हुआ है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ओके, सो नाउ जो स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव होता है इन द वाई डायरेक्शन, ठीक है, जो साई स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव होता है, वाई डेरिवेटिव होता है विद अ नेगेटिव साइन, गिव्स अस द वेलोसिटी इन एक्स डायरेक्शन। ठीक है, और जो स्ट्रीम फंक्शन का डेरिवेटिव होता है एक्स डायरेक्शन में gives us the velocity in v direction. Okay, so now we differentiate this equation with respect to y. इसको y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस डेल ओवर डेल y। ठीक है, साई कितना दिया हुआ है, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको आप डिफरेंशिएट कर लीजिए तो ये कितना आ जाएगा आपका 2y। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो v है, यहाँ पे भी हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डेल ओवर डेल एक्स। साई की वैल्यू हमें दी हुई है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे तो ये आ जाएगा 2x। नाउ जो पोटेंशियल फंक्शन होता है डी फाई, ये किसके बराबर होता है, डेल फाई बाई डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल फाई बाई डेल वाई डी वाई। ओके, तो ये क्वेश्चन जो है ये आपका यूनिट 2 से है, काइनेमेटिक्स ऑफ फोर्स है। ठीक है, नाउ ये जो डी फाइव बाई डी एक्स है, जो डी फाइव बाई डी आई है, ये किसके बराबर होता है, माइनस ऑफ यू। तो यू माइनस ऑफ यू इज इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल एक्स। ओके, एंड माइनस ऑफ वी इज इक्वल टू डेल फाइव बाई डेल वाई। ओके, नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ यू, यू इज 2y, तो डेल फाइव बाई डेल एक्स कितना हो जाएगा, डेल फाइव बाई डेल एक्स इज इक्वल टू माइनस 2y, एंड डेल फाइव बाई डेल वाई कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा minus 2x. So we put the value here, it will become minus 2y dx minus 2x dy. Okay, now we take minus common, 2 common, it will become y dx plus x dy. Okay, and d phi. So now we integrate it both sides, so it will become phi is equal to minus 2x y plus constant. Okay, so this is your potential function of the flow. So potential function of the flow is equal to माइनस 2xy प्लस सी। ठीक है, इसको आप चाहो थोड़ा सा और भी मॉडिफाई करना चाहो तो आप ऐसे लिख सकते हो, इंटीग्रल ऑफ डेल फाई इज इक्वल टू माइनस 2 इंटीग्रल ऑफ डी एक्स वाई। Okay, so you can write it like this also, and then you can move on to this step. Okay, so this is how you move. Okay, so this is your final answer. Okay, hopefully you like it. Next, this is the last question, which is asked in June. So what is the physical significance of mathematical terms del dot v and del cross v? Okay, so del dot v, it is actually divergence of v. Okay, it is divergence of velocity. Okay, so now what is the divergence? So you see, velocity has nearly components in the. Now you see, the velocity has basically three components. Okay, velocity is a vector quantity. So velocity v, velocity v has three component, u I cap, v j cap, and w k cap. Okay, so now this divergence is equal to I and del over del x plus j del over del y plus k del over del z. Okay, so now this multiplied by ui plus vj plus wk. So divergence of v is equal to del u over del x plus del v over del y plus del w over del k. Okay, so this is divergence of v. Now what is the curl of v? Now this del cross v represent the, okay, um, let me clear this. So divergence of v is equal to, you can write it down now,
Let me clear all this. Now what is del cross v? It is the curl of velocity, okay. Now what is the curl of velocity? Curl of velocity is called vorticity, okay. So you can remember this, curl of velocity is called velocity, vorticity. Now how we calculate this curl? We can take, so it can be written like this: del over del jk, okay, del over del x, del over del y, del over del z, and component of velocity are u, v, w, okay. So now we solve this determinant. You can solve it by writing it in the form like this. Hopefully you have studied this thing: I and j. This is del over del x, del over del y, del over del z, okay. This is del over del x and del over del y, okay. So you know how to solve this determinant. I am just writing it for your convenience, okay. So now you multiply this equation, 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 and multiply this equation, okay. So it can be written as I, okay, del over del y w plus j del over del z v plus k del over del x v, okay. U, let me check, u v w u and v, okay. So it will become u, it will come out to be u, and that will come out to be v, okay. Okay, so just let me check whether we are going right or not. Okay, so we have to check. Okay, so actually this looks somewhat meshy, so let me clear all this. So uh, curl of v, okay. So how we write curl of v? I j k del over del x, del over del y, and del over del z, okay. So we are solving that determinant. It will del over del x and del over del y, okay. It is u, v, w, and u and v, okay. So we are writing this. So physical significance, this represent divergence and this represent curl, okay. Curl, and curl of v is vorticity, okay. So we multiply this and this and this, so it will become I del w over del y plus j del u over del z plus k del v over del x minus, it will become, so we multiply this also, okay. So I'm writing it in the form of I, and so it will become k del y u minus I del over del z v and minus j del over del x w, okay. So we place all the component of I together, it will become del w over del y minus del v over del z plus j del u over del z minus del w over del x and plus k del v over del x minus del u over del y, okay. So this is the curl of v, okay. So the so curl of v is equal to this thing, okay. So this actually represent rotation, okay. So if you want to calculate rotation in z direction, this is rotation in y direction, and this is rotation in x direction, okay. So this is how you can solve your question, okay. So this is how you can solve question number A, okay. So curl of v is this, and divergence of v is equal to del over del x u plus del v over del y plus del w over del z, okay. I hope you understand this question, okay. Now let me solve the question B, okay. So just let me clear this, okay.
Okay, so if the velocity distribution in a turbulent flow is given by, so हमें क्या दिया हुआ है, velocity distribution दिया हुआ है for a turbulent flow y by delta raised to the power 1/9, और उसने हमसे क्या पूछा है, रेशियो पूछा है displacement thickness का और nominal layer thickness का. So what is displacement thickness? Delta star is equal to integral 1 minus u by u infinity. Okay, this is displacement thickness dy. Okay, so we put the value of u minus u, it will become 1 minus y by delta 1 by 9 dy. Okay, and we integrate it from 0 to delta. Okay, 0 to delta. Now what is this integration? So integral of 1 is y minus integral of y raised to the power 1 by 9 is y raised to the power 10 by 9. Okay, divide by 10 by 9 and delta. Okay, and we put the limit 0 to delta, so it will become delta minus 9 by 10 delta. Okay, so it comes out to be 1 by 10 delta. Okay, so this is the ratio. So the ratio of displacement thickness to nominal layer thickness is delta star is equal to 1 by 10 delta. So it comes out to be delta star by delta is equal to 1 by 10. Okay, so your answer is 1 by 10. Okay, so hopefully you like both of these numericals. So if you like it, you can like and subscribe for further solutions of fluid mechanics. Okay, thank you.